हैदराबाद मेट्रो रेल ने मंगल की रात 9 और 10 बजे के दरमियान एक अहम मेडिकल ट्रांसिट फराहम की। इस दौरान एक कामिनी हॉस्पिटल, एलबी नगर से यशोदा हॉस्पिटल पैरेड ग्राउंड्स तक डोनर का हार्ट और इसी हॉस्पिटल से यशोदा हॉस्पिटल मादापुर तक डोनर के लंग्स कामयाबी के साथ पहुंचाया गया। मेट्रो रेल की टाइमली फैसिलिटी ने मरीजों की जान बचाने में अहम किरदार अदा किया। We are transporting a heart and a pair of lungs from LB Nagar Kamini Hospital, and the heart will go to Yashoda Hyderabad. The lungs are going to Yashoda High Tech City, and these are covering large distances, and we are able to do this in just about 20 to 30 minutes in peak hour traffic, and that's because the government of Telangana has been kind enough to facilitate the availability of a metro train, especially for us, to transport the organs from one hospital to the other in peak hour traffic. And this is of a lot of importance because the amount of time that we spend in travel makes a lot of difference to the outcomes of transplant.